So hello everyone, welcome to Academically. The first question is from Bharat Barsa. She's asking that कि उन्होंने B Farm किया है in July 2024 में and she's just fresh graduate और ये ऑस्ट्रेलिया की जगह ये न्यूजीलैंड का एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं. So he's asking that for New Zealand require any experience in retail pharmacy or yes, Bharat, you are right. If you want to work in New Zealand, if you want to write this OPRA exam for New Zealand, you must have at least working experience 1 year in retail pharmacy or in the hospital pharmacy after you completed your Bachelor of Pharmacy or Doctor of Pharmacy. This is the minimum requirement to practice in New Zealand. So earlier it was the CAPS exam, but now you need to write OPRA exam for New Zealand. This is the minimum requirement to practice in New Zealand. So there is some difference in Australia and New Zealand. In Australia, there is no work experience required, but New Zealand requires 1 year working experience in retail pharmacy or hospital pharmacy. Then only you can write this OPRA exam. There is no more caps as like earlier, whether it is for Australia or New Zealand. Second difference, you have only 2 chances to pass this exam for OPRA for New Zealand. But in case of Australia, there are unlimited times you can write the exam. If you fail, you can write second time, third time, fourth time, fifth time. You just need to pay the fees for Australia. But for New Zealand, you have only 2 chance. There is no third chance for you. For third chance, you need to request them, and they may give or they may not give. So 2 chance मिलते हैं न्यूजीलैंड में. So there's a major difference here. Now if we're talking about the steps for New Zealand, the first step, initial assessment. This is the same for Australia and New Zealand. And step 2 is the OPRA exam you need to pass, whether it is for Australia or New Zealand. In this both cases, in these 2 steps are the same. Okay? But in New Zealand, the step 3 is different. So there is a New Zealand pharmacy legislation course you need to do, and this is a 3-month online course, and this is around 2,400 Australian dollar or New Zealand dollar. Basically, you need to pay the fees. There is no much difference in the Australian New Zealand dollar is little bit similar, around 50 to 55 rupees Indian rupees if I compare with So ये एक कोर्स करना होता है आपको न्यूजीलैंड के लिए. This is an online course, and the problem in this course, only once in a year you only can enroll in this course. ठीक है. Even if you pass earlier this OPRA exam, you need to wait to enroll in this course. तो ये वंस या एक ही साल होता है एक बार में, और वो करने के बाद अराउंड मार्च में इसका एडिशन होता है इन जनरल. एंड वंस यू पास दिस, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंटर्न. यू नीड टू डू इंटर्नशिप in New Zealand in general. So this is the only extra step basically in New Zealand. But like in Australia, you just need to go with the skill assessment, then OPRA exam, then English, then you can apply the PR visa, or you can find a sponsor, can go on work visa, or if you are in Australia on a study visa, you can write, or if you are in India, you also can go on study visa to complete this. While you are studying, you have a work right around 24 hours weekly you can work, and you can complete your internship in Australia like 1575 hours. Similarly for New Zealand as well, if you are going on study visa or you are studying in New Zealand, in this case also you can start your internship, but part time ही आप जॉब कर पाएंगे when you are on study visa. बाकी जो स्किल असेसमेंट का फीस अराउंड सिमिलर ही है, और जो एग्ज़ाम का फी भी है वो भी सिमिलर ही रहेगा, और ये थोड़ा सा this is a little bit different in these two. And exam centers जो अराउंड जो ऑस्ट्रेलिया के थे वही यहाँ के इसके भी रहेंगे, और सेम एग्ज़ाम है इसका OPRA. 120 क्वेश्चन, 2.5 hours टाइम, whether it is for Australia or New Zealand, it is same, but they are going to use this time the rush methodology. It is a little bit different from earlier. पहले जो है सारे क्वेश्चंस को सेम मार्क्स मिलता था, लाइक 1 क्वेश्चन को 1 मार्क, whether it is easy या मीडियोकर क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, सबको सेम मार्क मिलते थे. तो इफ़ यू कैन करेक्ट आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 आप पास हो जाते थे. अभी यहाँ पे क्या है, कोई क्वेश्चन को मे बी 1 मार्क, मे बी कोई दूसरे क्वेश्चन को मे बी 2 मार्क हो सकता है. तो हर क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से उसके मार्क्स होंगे, एंड ओवरऑल अगर आप 50% अगर आपने सही कर दिया, यू कैन पास दिस एग्ज़ाम. तो इसमें ये होता है कि अगर आपको इजी क्वेश्चन मिला है, आपने सही आंसर किया, देन कोई नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और टफ आएगा, वो भी आपने अगर थोड़ा सही कर दिया, करेक्ट कर दिया, देन आपका एक और टफ क्वेश्चन आएगा ना. तो ऐसे लेवल वहाँ बढ़ता जाता है. और अगर आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया,
तो वो एक लेवल नीचे का क्वेश्चन देगा आपको, और आपने फिर से रॉन्ग कर दिया फिर और एक लेवल नीचे का क्वेश्चन देगा ना, तो उस टाइप से वो क्वेश्चन जो है आपको मिलते जाते हैं। तो दिस इज टोटली डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है, दिस इज़ नॉट लाइक एज अर्लियर इन कैप में जो था। आई होप आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लीव इन कमेंट below and connect to Academically if you want to prepare yourself, you want to pass this exam in your first attempt, whether it is for Australia or New Zealand. We can help you to complete your A to Z process. I will see you in my other video. See you. Bye.